13th of April 2021, Winnipeg, and here we are in the middle of a blizzard, making our way from Hargrave Street to Osborne. Is it Osgood? No, it's Osborne. It's pretty intense. There's ice on the footpath, which I'm just going to show you in a second. But long story short, we thought the winter was behind us, and clearly we were, well, I was mistaken. I don't know about the Winnipeggers. I think Winnipeggers were maybe expecting this. But let me show you, let me give you a glimpse of the city. ये obviously अजीब सा कोई टेम्परेचर है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी आ जाता है और फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाता है. So you get all these funky icicles like that. You see those? Yeah. I think the only upside to this unexpected snowfall is, like, the trees look nice for a very short while, but other than that it's pretty ridiculous to have to walk through like 5 centimeters of snow. ऊपर से क्या है कि हवा भी चल रही है ना, ज़बरदस्त किस्म की. ये नहीं है कि सिर्फ स्नो है, एक ही कहंदा पे है. Warning to pet owners. कुत्ते दी टट्टी साफ कर लो, basically. Oh, that was cold. Not a good idea to clean snow with your bare hands. Obviously nobody's on the streets right now because this is not optimal for a walk. But I mean, it had to be captured. Somebody has to come and capture this shit. I mean, this is like, I mean, it's illegal. It should be, this weather should be illegal in April. मतलब है कि लाहौर में फरवरी में स्प्रिंग आके ख़त्म भी हो चुकी है और अब समर में आ गए लोग, और यहाँ पे अभी तक ये सिचुएशन चल रही है. इन्होंने वैसे हमें थोड़ा सा धोखा ज़रूर दिया, क्योंकि पिछला महीना अच्छा हो गया था. 16 डिग्री 18 डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर. ठीक है, धूप निकल आई थी, लोग साइकिलें कर रहे थे, अपनी सड़कों पे वॉक्स हो रही थी, मतलब पार्टी ऑन हो चुकी थी. चड्डे निकल चुके थे, वेस्ट बनियान चड्डे, सीन ऑन था. और अब ये मनहूस बर्फ़बारी शुरू होगी दोबारा अप्रैल में. असल मसला ये है कि विनिपेग जो है ना, वो एक नॉर्थ अमेरिका का सेंटर है एक तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल, जिसकी वजह से होता ही है कि जब यहाँ पे नॉर्थ का भी मौसम आ जाता है और साउथ का भी मौसम आ जाता है. तो नॉर्थ का जब आता है तो फिर वो नॉर्थ पोल का आता है, और साउथ का जब आता है तो फिर वो बाकी अमेरिका वगैरह का आता है. वेस्ट कोस्ट से भी आ जाता है, ईस्ट कोस्ट से भी आ जाता है. सो बहुत ही अजीब जगह है ये, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है वो -40 तक भी जाता है मौसम, और +30 प्लस मिड 30s में भी चला जाता है. अब लगता तो है ये खूबसूरत, इट्स नॉट बैड, लाइक दिस इज, आई डोंट नो, लाइक इट इज़ प्रीटी, इट्स नॉट बैड लुकिंग, राइट? आई मीन visually it's nice to have so much clean white snow on the ground, and to, you know, like, it looks really pristine and everything, but and well, isolating at the same time. लेकिन ये है कि इसको सहना जो है ना, इसको देखना आसान है लेकिन इसको सहना थोड़ा मुश्किल है. खैर, हमें तो अब आदत हो गई है, कनाडा में बड़ा वक्त गुजार लिया है, और -2 -1 तो कुछ भी नहीं कहता आपको.
-15 पे जाके जो है ना नाक और मुंह और कान और गाल जो है जमना शुरू होते हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है चेहरे को कम से कम. बाकी I mean, you can see that I'm well clad, so it's not that I'm feeling cold or anything. So you do adapt, and it gets okay. Like it's not that problematic. Winnipeg का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पे इस बिल्डिंग में होती है, और इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर अभी शायद आपको ना नज़र आए, but there's a golden boy that was gifted to Canada by France. ये लुई रियल का स्टैचू है जो कि मेटी लोगों का लीडर था. इसने कनाडा के फेडरेशन के साथ कोई डील करने की कोशिश की थी अपने लोगों के लिए. अब ये इस बंदे के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन अब मैं इस बोर्ड को साफ़ करने नहीं लगा अपने नंगे हाथ के साथ, क्योंकि वो गलती मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ. और गलतियाँ दोहराते नहीं हैं लोग, गलतियों से सीखते हैं लोग. भले दोहरा भी सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस किस्म के इंसान हैं. अच्छा जी, अब मैं बर्फ़ के थ्रू जा रहा हूँ और मेरे जूतों के अंदर बर्फ़ आ गई. एक गलती मैंने की है, क्लैड तो मैं हूँ लेकिन मैंने मोज़े जो है ना एंकल हाइट वाले पहने, तो जब वो बर्फ़ जूतों के अंदर जाती है तो फिर वो पैरों में भी घुस जाती है, लेकिन मेल्ट हो जाती है, तो फिर आपके पैर गीले हो जाते हैं. ठंड इतनी नहीं लगती लेकिन पैर गीले हो जाते हैं. तो अब यह है कि -2 -3 इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो हवा है ना वो आके मुंह पे चंडे करा रही है इस वक्त. तो दैट्स नॉट वेरी नाइस, यू नो, इट्स नॉट वेरी नाइस for the wind to do something like that to an innocent man who is just making his way through town. Like मैंने क्या बिगाड़ा है बेचारी हवा का कि वो आके मुझे चंडे कराए. You know, I come in peace, let me live in peace, but no. अच्छा, I've come closer to the legislative building, so it looks nicer from here. Finally, a very close shot of the golden boy, and you can see his butt from this angle, I'm sure. I don't know if I can zoom. There's got to be a zoom feature here somewhere. उसकी एक टांग हवा में, एक हाथ हवा में, और वो आगे की तरफ भाग रहा है. बॉय जो है दौड़ रहा है तरक्की की सड़क पे और गोली की रफ्तार से आगे जा रहा है. ये विनिपेग का लड़का. ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे कई जमी हुई. इस गाड़ी को देख लें, बुरी तरह जमी हुई है ये. नहीं, ये इसलिए नहीं खड़ी हुई इधर क्योंकि ये जमी हुई है, प्रॉब्ली पार्क्ड है इधर. लेकिन आप मतलब दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द वेदर, एन आइडिया ऑफ द वेदर. ये इनके मशहूर लोग हैं, इन्होंने भी कुछ किया होगा यकीनन किसी ज़माने में, आके कोई गंद डाला होगा कनाडा में. मेजर जनरल जेम्स वुल्फ द नामसी 1759 मेरा ख्याल है फौत हो गया. लेट द ब्रिटिश फोर्सेस इन डाइड इन टेकिंग क्वेबेक एट द फर्स्ट बैटल ऑफ द प्लेन्स ऑफ अब्राहम ऑन सितंबर. Effective rule over Canada from France was thus ended, and the cession of Canada to Great Britain was completed in 1763. तो बेसिकली ये गोरा अंग्रेज़ था, उसने फ्रांसीसियों को मार के ले लिया क्वेबेक. लेकिन फिर क्वेबेक वापस फ्रांसीसियों को चला गया होगा, क्योंकि क्वेबेक तो अब सारा मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग ही है. बहरहाल कॉलोनियल्स ने गंद ही डाला है, आपस में एक दूसरे को मारा है, इंडिजिनस लोगों को मारा है. स्टैचू तो नहीं बनता खैर इनका इधर. ओके, दिस इज द एंट्रेंस टू द मेन बिल्डिंग. आई थिंक दिस इज लाइक द पब्लिक एंट्रेंस perhaps. And mind you, this 13th April 2021, 13th April. Okay, a lot of the world, most of the northern hemisphere is enjoying either spring or summer right now, and Winnipeg is not. और हाँ,
बस अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। मेरी इवनिंग वॉक हो गई है और कई मेरी इवनिंग वॉक्स इससे ज़्यादा इंटेंस मौसम में हुई हैं। ये रिलेटिवली आसान मौसम में इवनिंग वॉक किया। अभी तो मैंने काफ़ी एक लाइट सी जैकेट पहनी हुई है और मेरा मुंह भी कवर्ड नहीं है। आई मीन if you're walking, if you're doing like a 8-kilometer walk in -20, there's no way in hell that you can have your nose and lips and cheeks exposed to the weather. So I've done a lot of those walks as well, but those were in the winter. And yeah, it's important to do those walks because you can't, I mean, personally I can't stay indoors for too long. Like it gets to me, I get claustrophobic. I don't know if claustrophobic is the right word, but I just, you know, in like (33) Hargrave Street, this is where we live. There's over 200 apartments in the building. We're on the 10th floor. Somewhere in the middle, somewhere there. I'm just sitting having soup or coffee right now. But I would love some warm drinks to get the blood flow back in my face, which is kind of frozen at the moment, and it's very difficult to move my lips, as you can see. Quite literally sort of just like opening the fridge and walking into the freezer kind of situation, just that there's high winds as well on top of the cold temperature. So if you were like a dead animal and if you wanted to preserve yourself, it's great. Just, you know, step outside of the house and you're fine. And then when somebody needs to cook you, then they can just drag you back inside and put you in the pot and they can have a meal. But other than that, it's there's not much that can be said. Look at that. I just want to show you the play of the wind on the snow. So जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो ऊपर से तो गिर ही रही है बर्फ़, लेकिन जो ज़मीन की बर्फ़ है ना वो भी उड़ती है, वो नीचे से आग लगती है। ऊपर की बर्फ़ ऊपर से, नीचे की बर्फ़ नीचे से, बीच में आप क्या बकवास है। मतलब है कि बेहूदगी की भी कोई इंतहा होती है कि नहीं। ये सुट्टों के लिए जगह इन्होंने बनाई है। आ जाते हैं कुछ सुट्टेबाज इधर सूटा मारने। साथ ही इन्होंने लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। So I think they need to make up their mind about what's allowed and what's not allowed.